अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो हमारे करियर पर असर पड़ेगा. इफ़ दिस प्रोजेक्ट फेल्स इट विल इफेक्ट आवर करियर्स. इफ़ दिस प्रोजेक्ट फेल्स इट विल इफेक्ट आवर करियर्स. अगर वो टीम के साथ ईमानदार नहीं है तो हमें कुछ करना होगा. इफ़ ही इज़ नॉट ऑनेस्ट विद द टीम वी विल हैव टू एक्ट. इफ़ ही इज़ नॉट ऑनेस्ट विद द टीम वी विल हैव टू एक्ट. अगर तुमने अब भी समझदारी नहीं दिखाई तो नुकसान तुम्हारा ही होगा. इफ़ यू स्टिल डू नॉट एक्ट वाइजली यू विल बी द वन टू लूज. इफ़ यू स्टिल डोंट एक्ट वाइजली यू विल बी द वन टू लूज. अगर मैंने पहले से तैयारी की होती तो ये नहीं होता. इफ़ आई हैड प्रिपेयर्ड इन एडवांस दिस वुडंट हैव हैपन्ड. इफ़ आई हैड प्रिपेयर्ड इन एडवांस दिस वुड नॉट हैव हैपन्ड. अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला तो सब कुछ बिखर सकता है. इफ़ योर कॉन्फिडेंस शेक्स एवरीथिंग कैन फॉल अपार्ट. इफ़ योर कॉन्फिडेंस शेक्स एवरीथिंग कैन फॉल अपार्ट. अगर उसे अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है तो मामला और बिगड़ेगा. If he still does not realize his mistake, things will worsen. If he still doesn't realize his mistake, things will worsen. अगर टीम का लीडर ही कमज़ोर है तो सफलता मुश्किल है. If the team leader himself is weak, success is difficult. If the team leader himself is weak, success is difficult. अगर मैं अपने बॉस को सब कुछ बता दूं तो क्या तुम पीछे हट जाओगे? If I tell everything to my boss, will you back off? If I tell everything to my boss, will you back off? अगर कंपनी को तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई है तो उसे दूर करो. If the company has misunderstood you, clear it up. If the company has misunderstood you, clear it up. अगर तुम्हें मौका दोबारा मिला तो क्या अलग करोगे? If you get another chance, what will you do differently? If you get another chance, what will you do differently? अगर वो तुम्हारे बदले किसी और को चुन ले तो What if they choose someone else instead of you? What if they choose someone else instead of you? क्या तुम अब भी डर के साए में जी रहे हो? Are you still living under the shadow of fear? Are you still living under the shadow of fear? उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए. चुप रहना अब और विकल्प नहीं. He must be punished for what he did. Staying silent is no longer an option. He must be punished for what he did. Staying silent is no longer an option. हर घाव दिखाई नहीं देता, कुछ अंदर छुपे होते हैं. Not every wound is visible. Some are buried deep within. Not every wound is visible. Some are buried deep within. क्या उसने तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी? Did he also threaten to kill you? Did he also threaten to kill you? कभी कभी इंसाफ की राह कठिन होती है लेकिन ज़रूरी भी. Sometimes the road to justice is hard but necessary. Sometimes the road to justice is hard but necessary. एक सच्चा इंसान अपने गुनाहों को छुपाता नहीं है, स्वीकार करता है. A true person doesn't hide his sins, he owns up to them. A true person does not hide his sins, he owns up to them. उसने गुस्से में आकर तुम्हें सच में चोट पहुंचाई थी. Did he seriously hurt you?
in a fit of rage? Did he seriously hurt you in a fit of rage? जो तुम कर रहे हो वो नैतिक रूप से गलत है. What you are doing is morally wrong. What you are doing is morally wrong. तुम्हें यह समझना होगा कि हर गलती पाप नहीं होती. You need to understand that not every mistake is a sin. You need to understand that not every mistake is a sin. क्या उसने तुम्हें मारा? Did he hit you? Did he hit you? ये पाप है. This is a sin. This is a sin. तुमसे मिलना मेरे लिए एक अधूरी तलाश का अंत था. Meeting you was the end an incomplete search for me. Meeting you was the end of an incomplete search for me. मेरे साथ भी ऐसा कुछ अजीब हो चुका है. Something weird like that has happened to me too. Something weird like that has happened to me too. गिरने की आवाज़ इतनी तेज थी कि सब चौंक गए. The sound of the fall was so loud that everyone was shocked. The sound of the fall was so loud that everyone was shocked. क्या बाईं आंख फड़कना हर किसी के लिए एक ही मायने रखता है? Does left eye twitching mean the same for everyone? Does left eye twitching mean the same for everyone? मुझे उसे कुछ कहना चाहिए या उसे जाने देना चाहिए. Should I say something to him or just let it go? Should I say something to him or just let it go? आंख फड़कना कभी कभी सिर्फ थकान भी होता है. Eye twitching can sometimes just be from fatigue. Eye twitching can sometimes just be from fatigue. उसने जैसे ही उठाया फोन चटक गया. The moment he picked it up, the phone cracked. The moment he picked it up, the phone cracked. इतनी नज़दीकी से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता. I don't like talking from such a short distance. I don't like talking from such a short distance. थोड़ा पीछे हटो, सांस लेने की जगह चाहिए. Move back a bit. I need space to breathe. Move back a bit. I need space to breathe. तुमने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? Why haven't you called him yet? Why have not you called him yet? उससे फ़ोन पर बात हो गई तुम्हारी. Did you get to talk to him on the phone? Did you get to talk to him on the phone? अगर फ़ोन नहीं उठाता तो टेक्स्ट कर दो. If he doesn't answer, just text him. If he does not answer, just text him. तुमसे जितनी उम्मीद थी तुमने उतना ही तोड़ा है. You have broken every bit of trust I had in you. You have broken every bit of trust I had in you. तुम्हारा व्यवहार मुझे शर्मिंदा करता है. Your behavior embarrasses me. Your behavior embarrasses me. अब तुम्हें खुद अपनी गलतियों को सुधारना होगा. Now you have to fix your own mistakes. Now you have to fix your own mistakes. तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो. You only think about yourself. You only think about yourself. अगर तुम सही होते तो मैं चुप रहता. If you were right, I would have stayed silent. If you were right, I would have stayed silent. मैंने बहुत सह लिया, अब और नहीं. I have tolerated enough, no more.
I have tolerated enough, no more. तुम बार बार मेरी बात काटते हो. You constantly interrupt me. You constantly interrupt me. इसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है. It's your responsibility to take care of it. It's your responsibility to take care of it. तुम्हें इस काम के लिए हामी भरनी होगी. You will have to agree to this task. You will have to agree to this task. अब बहुत हो गया, इसे यही ख़त्म करो. That's enough and this here. That's enough and this here. खिड़की खोल दो, बहुत गर्मी हो रही है. Open the window, it's too hot. Open the window, it's too hot. तुम्हें उसके घर खुद जाकर बात करनी चाहिए. You should go to his house and talk yourself. You should go to his house and talk yourself. सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहो. Be ready to answer the questions. Be ready to answer the questions. अपनी जगह साफ रखो. Keep your place clean. Keep your place clean. अगर उसका हक होता तो वह अब तक साबित कर चुका होता. If he had any right, he would have proven it by now. If he had any right, he would have proven it by now. हवा चलने से पर्दे उड़ने लगे और कमरा ठंडा हो गया. The curtains fluttered in the breeze and the room cooled down. The curtains fluttered in the breeze and the room cooled down. बिना प्रमाण के कोई अधिकार नहीं बनता. Without evidence, there's no entitlement. Without evidence, there is no entitlement. हवा का रुख बदलते ही उसने भी अपनी बात बदल दी. He changed his stance the moment the tide turned. He changed his stance the moment the tide turned. कानूनी अधिकार होने के बाद ही कोई दावा कर सकता है. Only someone with legal rights can make a claim. Only someone with legal rights can make a claim. हवा की सरसराहट ने मुझे पुरानी यादें दिला दी. The rustling of the wind brought back old memories. The rustling of the wind brought back old memories. मुझे यकीन है कि वह मेरी गैर मौजूदगी में कुछ छुपा रहा है. I am sure he is hiding something in my absence. I am sure he is hiding something in my absence. कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी का मीटर ही खराब है. Could it be that the fuel gauge itself is faulty? Could it be that the fuel gauge itself is faulty? कभी कभी धोखा उन लोगों से मिलता है जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है. Sometimes betrayal comes from those we trust the most. Sometimes betrayal comes from those we trust the most. अगर पेट्रोल खत्म हुआ तो पूरी योजना विफल हो जाएगी. If the petrol runs out, the whole plan will collapse. If the petrol runs out, the whole plan will collapse. उसने जिस तरह से बात की मैं सब समझ गया. The way he spoke, I understood everything. The way he spoke, I understood everything. तुम्हारी आंखों में अब पछतावा दिख रहा है. I can see the regret in your eyes now. I can see the regret in your eyes now. धूप झेलने की आदत नहीं हो तो बाहर मत जाओ. If you can't handle the heat, don't step outside. If you can't handle the heat,
Do not step outside. सुधरने में शर्म कैसी, यही तो हिम्मत है. What's the shameful about improving? That's true courage. What's the shameful about improving? That is true courage. तुम्हारा आज का कदम तुम्हारा कल तय करेगा. Today's step will define your tomorrow. Today's step will define your tomorrow. बातें बाद में करना, पहले खुद को संभालो. Talk later, handle yourself first. Talk later, handle yourself first. अगर अभी नहीं जागे तो पछताना पड़ेगा. If you still don't wake up, you will regret it. If you still do not wake up, you will regret it. तुम्हें अभी लगता है कि तुम सही कर रहे हो. Do you still think you are doing the right thing? Do you still think you are doing the right thing? तुम बिना सोचे समझे फैसला क्यों लेते हो? Why do you make decisions without thinking? Why do you make decisions without thinking? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी लेकिन तुमने नहीं सुनी. I warned you but you didn't listen. I warned you but you did not listen. तुम हमेशा टाल मटोल क्यों करते हो? Why do you always procrastinate? Why do you always procrastinate? अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो बहुत पछताओगे. If you don't change now, you will regret it badly. If you don't change now, you will regret it badly. तुम हर बात को हल्के में क्यों लेते हो? Why do you take everything so lightly? Why do you take everything so lightly? तुम धूप में क्यों खड़े हो? Why are you standing in the sun? Why are you standing in the sun? So friends, ये था हमारा आज का वीडियो. If you like this video and learn something new from this video or this channel, then don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel English Succeed Pro. Keep learning, keep growing. Thank you everyone.